So, hi guys, I'm Asad Kothari, a teacher for you, teaching business subject, and welcome to this video. This video is about past paper case readings, okay? And now this video is targeted towards paper 3 of A2 levels. What I do here for you is कि मैं यहाँ पे case read कर रहा होता हूँ और तुम्हें समझा रहा होता हूँ. Obviously, in this video, in this playlist that you are following, if you are following. But you should know that we are going to have our live past paper classes from January 2026. And in those live past paper classes, Zoom पे हमारे सेशंस हुआ करेंगे जिसमें हम ये जो पूरा पेपर हम यहाँ रीड कर रहे हैं उसको हम एक्चुअल में अटेम्प्ट करेंगे. वी आर गोइंग टू राइट द आंसर्स टुगेदर. वी आर गोइंग टू गो थ्रू द मार्किंग स्कीम्स आल्सो, सो इट हेल्प्स यू टू ड्रिल इन द राइटिंग स्किल्स और प्रॉपर्ली से. सही है. सो ये जो वीडियोस हैं ये तुम्हें केस की रीडिंग हेल्प कर रही है. एंड इफ यू रियली वांट टू राइट दीज आंसर्स विद मी, then you will have to register for our past paper live classes, which are starting from January. And I'm really excited and looking forward to those sessions. And I'm excited to connect with you more on our Zoom live sessions in those past paper classes. And on your screen right now, you can see May-June 2025 variant 32. Okay, we are going to use this case. और इस वीडियो में basically objective ये है, तुम सीखोगे ये कि जब paper 3 तुम देने जाओगे as a student. Okay, so how do you actually read the case? How do you read and understand the case while in A2 level paper 3 examination? और मैं क्या करूँगा, मैं जो है अभी इस केस को अगर हम देखें तो इसमें Pura AI Robots Pair is the name of the business and the case that appeared in May-June 2025. What I'm going to do is you just consider me as a student. Okay, मैं अगर स्टूडेंट होता तो मैं अगर एग्जाम में बैठा होता तो मुझे किस एंगल से इस चीज़ को रीड करना होता है. Okay, so let's see what this business is. I'm just going to read the case for you, and you should probably make your notes while reading and watching this video, so it will help you to understand the techniques better. So, Pair was set up in 2012 by Cardinal Lane, a graduate in applied artificial intelligence. Pair is a private limited company in country F. Okay, so Pair is operating in country F as a private limited company. Cardinal, the managing director, owns 70% of the shares. ठीक है जी. 4 other directors own the remaining shares. ठीक है जी. 5 total directors हैं. Karna is like majority shareholder and the remaining 4 directors are probably holding 30% of the remaining company. Pair's mission statement is to transform business use of robots. Pair designs and manufactures robots which uses artificial intelligence to support business operations. Pair's most successful robot, the KB1, is an autonomous cleaning robot. In 2024, the KB1 had the leading market share in country F. It is also successful export for Pair. The global market for autonomous cleaning robot is competitive and with many brands available in the market. Okay, so हम robots बनाते हैं, AI powered robots हैं. KB1 हमारा successful robot है basically, और market काफ़ी competitive है. याद रहे case को read करते हुए तुम इसको visualize करना, try to see okay we are making robots, it's a high tech industry. जिस तरह की इंडस्ट्री हो ना उसको ज़रा सोचा करो ताकि ताकि you understand it while reading. Okay, you should be able to visualize some sort of robot maybe. Okay, so और चाहो तो इसके ऊपर लिख भी सकते हो तुम लेफ्ट राइट के ऊपर, क्योंकि पूरा केस एक दफ़ा पढ़ेंगे, बार बार पेपर में बैठ के तुम केस नहीं रीड कर सकते. एक दफ़ा रीडिंग करोगे, सही से रीड करोगे, तो बार बार तो पूरा पूरा केस नहीं पढ़ लोगे ना, वरना फिर how you would manage time. So as the next paragraph is about growth. Okay, so let's see what this business is doing related to growth. The first version of the KB1 was launched in 2013. Pair's sales strategy focused on leasing to businesses to provide a cost-effective solution to cleaning the workplace. Initially, sales growth was slow, led by the sales team contacting prospective customers to arrange product demonstrations and trials. Okay. And leasing हम कराते हैं robots की, probably महंगा product है तो वो किस्तों पे दे देते हैं हम businesses को, और हम product demonstrations कराते हैं. Probably customer जो client होगा जो robot खरीदना चाह रहा होगा वो उसको हम बताते होंगे कि robot कैसे use होता है, and my people would be telling them how to use a robot. However, global economic growth after the pandemic led to labor shortages, which affected the recruitment of cleaning employees. Consequently, many schools, offices, and hotels approached Pair to lease the latest version of the KB1. Revenue grew rapidly from 2021, but Pair was unable to fully meet demand due to production constraints. Oh my God, okay, COVID was good news for this business. That's kind of cool, because as the people were being laid off, people wanted to automate their cleaning process and they contacted Pair. बट इतनी डिमांड बढ़ गई कि इनके पास कैपेसिटी इश्यूज आना शुरू हो गए. अच्छा, फिर innovative technologies. Obviously, it's a very high-tech industry. Let's see what this paragraph tells us. So, Pair invests 7% of revenue in research and development compared to the industry average of 5% in 2023. The 8th version of the KB1 was launched, providing a more innovative, powerful, and quieter cleaner.
This version has a longer battery life and can clean different floor types. It uses video technology to learn as it cleans. Wow, okay, so अच्छा खासा पैसा ये रिसर्च पे लगा रहे हैं. नया 8th वर्जन आ गया इनका. In 2024, Pear began development of a new AI delivery robot, Delbot, which will target the hotel market. It will deliver food, towels, and other items to hotel rooms. Karina confirmed in a press release that the Delbot will be available to customers from early 2026. She commented that the whole process from concept to product launch will only take 18 months. So they are working on a new product, Delbot, delivery robot. अभी cleaning robot की कामयाबी के बाद अचानक से अब ये जो है वो डिलीवरी रोबोट के ऊपर जाने वाले हैं. वाओ मैन, ओके, दे आर ट्राइंग टू टारगेट न्यू मार्केट. दैट्स प्रीटी कूल. Organizational structure. So Pear has a flat organizational structure and is divided into functional departments. The R&D department uses a matrix structure, creating one-off teams for specific projects. In 2024, Pear employed a total of 120 employees. So 120 people are working. They're mainly divided into different functions, probably HR, marketing, operations, finance. इन्होंने functions में divide किया हुआ है, but जो research department है उनका वो matrix structure, team-based structure use करते हैं. Probably project के हिसाब से वो teams बनाते होंगे ताकि जैसे Delbot के लिए probably कोई research and development की team होगी. सो क्वालिटी डिफेक्ट्स का पैराग्राफ है. इसका मतलब है कुछ क्वालिटी इश्यूज आए हैं, प्रॉब्ली कैपेसिटी इश्यूज भी हैं, कस्टमर ज़्यादा हो गए हैं, क्वालिटी का भी एक पैराग्राफ आ गया. सो देखो ना, पैराग्राफ की हेडिंग पढ़ते ही एक आइडिया हो जाता है कि वो कौन से चैप्टर से रिलेटेड है. ठीक है, व्हेन यू रीड द हेडिंग ऑफ द पैराग्राफ यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज ओके व्हिच यूनिट डज इट बिलोंग टू, व्हिच चैप्टर डज इट बिलोंग टू, मे बी यू थिंक लाइक दैट. ओके, सो एट द एंड ऑफ 2023, Pear's operations director reported increasing quality problems. The annual percentage of defective KB1s reported by quality control inspectors had doubled to 2%. My God. So increased customer reports of KB1s not working properly, increased complaints of poor customer service. Customers की शिकायतें आना शुरू हो गई. So in June 2024, Pear began the process of replacing quality control with quality assurance. Okay, they're trying to replace the quality system. This included improved training of employees, all production employees made responsible for quality, and targets for technicians to fix any faults reported by customers within 24 hours. Now they are actually working on quality now. Okay, उनको समझ आ गया कि quality system change करने की ज़रूरत है. Staff को empower कर रहे हैं कि भाई quality के अंदर problems ढूंढो और customer की शिकायत को 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो deal करके दो. So table 1.1 provides production and employee data for the KB1 factory. In 2024, Pear had a labor productivity target of 2200 KB1s per employee. ठीक है, प्रोडक्टिविटी पर एम्प्लॉई वो चाहते हैं कि हर बंदा ऑन एन एवरेज 2200 KB1s बनाए. ठीक है, और फिर टेबल 1.1 क्या बता रहे हैं हमें? एंड ऑफ ईयर प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉय डेटा फॉर द KB1 फैक्ट्री. ठीक है, KB1 हमारी फैक्ट्री है. 23 और 2024 का डेटा गिवन है. सबसे पहले हमें बताया हुआ है प्रोडक्शन एम्प्लॉइज. लास्ट ईयर 40 people were working for us and now 50 people are working for us. The number of employees have increased. And the output last year was 85,000. This year the output is 105,000. So the output has also increased, probably because the demand was also increasing, as we saw in the case. And KB1 output failing to meet quality standards. Last year the defect rate was 2%, and this year the defect rate is up to 2.1%. And number of production employees leaving. Last year 4 people left our factory, and this year 2 people actually left the factory. That is a good sign. Labor turnover probably थोड़ा कम. अच्छा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लीविंग जो है वो कम भी हो रहा है. सही है, मतलब गुड सी लग रहा है, कुछ अच्छा भी है, बुरा भी नहीं है सब. So Karna is concerned whether the decision to introduce quality assurance has been beneficial for Pear. Okay, so now she wants to assess that how effective this decision was to change the quality system in this organization. Okay, और अच्छा, फिर इसके बाद हमें डिविडेंड्स से रिलेटेड कुछ डिटेल्स दी हैं इस वाले पेपर में. Karina plans to expand the product portfolio and enter new international markets. Okay, that's another major issue. So you understand when you read the case, कितने different issues चल रहे हैं इस business के अंदर. देख रहे हो कितना, कहाँ से शुरू हुई थी कहानी कि पहला ये रोबोट लेकर आए थे, फिर ग्रोथ हो गई, फिर कोविड आ गया, नया प्रोडक्ट भी बन रहा है, फिर क्वालिटी के इश्यूज चल रहे हैं, और अभी एक और इशू आ गया भाई बिजनेस में कि डिविडेंड्स कुछ बढ़ाने की बात है. सो नाउ these different paragraphs are different issues that this business is actually going through, right? And when you will be in an exam, you will not get the same case. But when you see a case in paper 3, so you should read it like you're reading different issues of that business, just like I'm doing it right now in this video. Okay. So Karina plans to expand the product portfolio and enter new international market.
Pear's growth has been financed from retained profit and long-term borrowing. Karna is now considering whether to change Pear to a public limited company. Table 1.2 shows selected financial data and ratios for Pear. फिर हमारे पास selected financial data आ गया again 23 and 24. रेवेन्यू हमारा सिग्निफिकेंटली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है 65 से 95 पे जंप किया रेवेन्यू ने. ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 5.85 का था, इस साल हमारा 10.4 हो गया. बहुत अच्छा प्रॉफिट में भी जंप है. इंटरेस्ट इन टैक्स हमारा बढ़ गया है $4.05 मिलियन से अब $6.4 मिलियन पे आ गया है इंटरेस्ट इन टैक्स बेसिकली. और डिविडेंड्स जो है वो हमने सेम ही रखे हैं $0.56 मिलियन. लास्ट ईयर भी डिविडेंड दिया था और इस साल भी हमने सेम ही डिविडेंड दिया है. आई डोंट नो द प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग बट द डिविडेंड्स हैव जस्ट रिमेन द सेम. यू सी, जब प्रॉफिट बढ़ता है तो जनरली आप अपने शेयर होल्डर्स को भी रिटर्न्स के फॉर्म में देते हो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने डिविडेंड्स नहीं बढ़ाए, प्रॉफिट कमा रही कंपनी. और गेयरिंग हमारा 35% था, इस साल हमारा 40%. प्रॉब्ली वी आर टेकिंग मोर डेट फाइनेंसिंग लोन्स. और करंट रेशो हमारा 0.96 था रेशो 1 और इस साल हमारा 0.8 पे आ गया करंट रेशो. लिक्विडिटी सीम्स काइंड ऑफ 1 से भी नीचे पे है करंट रेशो. सो दिस इज द नंबर्स दैट और प्रॉब्ली हर केस के अंदर नंबर्स दिए हुए होते हैं. जब तुम पेपर दे रहे होगे तो वो तुम्हें भी कोई ना कोई नंबर्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी पता होती है ना कंपनी की, तो मैं फिर उसको बेहतर उसके हिसाब से सजेस्ट करता हूँ. जैसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ होगी मेरे आंसर्स भी उस तरह से मोल्ड हो जाएंगे. कंपनी की फाइनेंशियल यहाँ पे नजर आ रहा है परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, तो जब मैं आंसर लिख रहा हूँ ना, माय बैक ऑफ माय माइंड आई शुड नो दैट द कंपनी इज वेरी फाइनेंशियली स्ट्रांग. व्हेन आई सजेस्ट और गिव एन ओपिनियन टू दिस बिजनेस आई विल बी मोर like, you know, when I know okay the company is financially rich and can go for such and such options. But अगर फाइनेंशियली ऑफ होते हालात, नीचे जा रहे होते नंबर्स, तो मेरा आंसर ही चेंज हो जाता फिर, क्योंकि फिर मैं उस कंपनी की बात कर रहा होता जो फाइनेंशियली अच्छी नहीं है, तो मुझे उसको फिर वही ऑप्शन सजेस्ट करना पड़ेगा ना जो उसकी फाइनेंशियल हेल्थ के हिसाब से हो. So the other 4 shareholders are dissatisfied with Pear's dividend payments and are pressuring Karna to increase the dividends for 2025. बाकी 4 डायरेक्टर्स जो कंपनी 30% ओन करते हैं उनको हमने कहा है हाँ, वो बेसिकली चाहते हैं कि डिविडेंड्स बढ़ाए Karna. ठीक है, सही है. So contingency planning, last paragraph. In February 2025, a battery in one of the latest KB1 robots overheated, causing a fire at the school where it was operating. Damn, आग लग गई भाई स्कूल में, robot फट गया. The operations director investigated and found that there was a fault in the battery supplied to Pear. Following the investigation, Pear issued a press release in April identifying the battery supplier as being responsible for the fire. Oh my God. Okay, उन्होंने कहा भाई सप्लायर ही गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है. मतलब फुल ब्लेम गेम खेल रहे हैं. The marketing director is concerned about Pear's lack of contingency planning. She has finally persuaded Karna to call an emergency board meeting to consider the benefits of contingency planning. So they did not have a contingency plan clearly because they just said कि oh हमारी तो कोई गलती नहीं है, सप्लायर ही गलती है. And they just passed it on. This was not the right way to say, I think so. They should have like, okay, ठीक है, something has gone wrong and we take responsibility of it. And then we're going to take actions to remedy or maybe to keep the stakeholders satisfied somehow. But they just said कि supplier ही गलती है. So clearly contingency planning इतनी अच्छी नहीं है इस कंपनी की. और ये हमारा केस आया था मई-जून 2025 जो अभी पिछला साल था. So this is how you read the case, okay guys? And as students, when you read the case, obviously you need to have a practice and a flow of reading. So at homes, try to randomly read cases, open past papers, कोई भी past paper उठाओ, cases उठाओ, read करो, और try to understand the case rather than just reading it. So this is how we read the case, okay? And this is what I've got you for today's video, and I hope this was a helpful video for you all. Just practice reading more, and that's it, and see you in the next video.